उस समय दिन का दिहाड़ी का काम करता था मैं। इस वीडियो का मैं तेरे को 20,000 रुपए, लाइक आई नो लॉन्गर हैव माई मदर दैट आई कैन क्रिएट कंटेंट विद। Do you think so that network is what you have built? मुझे ये नेटवर्क, ये चीजें कुछ समझ आती नहीं थी शुरू में, ठीक है। From introvert to extrovert. People talk like I love to be alone. I never love to be alone. You have to do one last thing. So what is up guys, my name is Paritosh Anand. अरे भूल गया भाई मैं। Take number 3. अच्छा नहीं। So what is up guys, I hope you have a cracker of a Sunday, Monday, Tuesday, whatever day you're living. My name is Paritosh Anand, that Desi Vlogs. भैया आओ आज का पॉडकास्ट का कार्यक्रम शुरू करते हैं। Hey everyone, this is Minesh and welcome back to another episode of Modernizing Biz Podcast. On this episode, we have Paritosh Anand with us. So I've been planning for this episode for almost 3 years. अब जाके तुम्हारा टाइम मिला है. अरे भाई So bro, like 3 साल how's से मेरे everything? पीछे भाग रहा है क्या भाई? 3 साल से check your DM, you'll get to know. नहीं ये रेलेवेशन मैं अपने आप को नहीं दूंगा। So it's great that you've been replying almost a lot of DMs and that's how we figure out to do this. Just by the way, this is something that I do. एंड लाइक ये मतलब इनफैक्ट अभी आने से पहले भी मैं मतलब ये करता हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार 1 बार ये मैं स्टोरी डाल देता हूँ कि 10 मिनट तक मैं अपने डीएम्स खोल रहा हूँ, जिसको बात करनी है वो बात करो फटाफट से। So how many DMs you do? Easy 500 to 1000 DMs I replied back to in those 30 minutes. ये जब भी मतलब कैब वगैरह में इधर उधर होता हूँ, नवी मुंबई टू बॉम्बे, ये वाला टाइम मेरे को मिलता ही है, तो आई ट्राई टू ब्रिज दैट गैप बिटवीन मी एंड माय ऑडियंस। How's Mumbai treating you? अरे मजा आ रहा है भाई, Everything's good. I mean it's a strange city. It's very difficult to survive here at times, but you take what you have to take from it. You know, you can either take the negatives out of it, you can either take the positives out of it. We choose to take the positives out of it. So like let's go behind your Dehradun scenes and let's like wanna know कि देहरादून में क्या life थी. I know like all your friends from the beginning. जब हम आपके 5-6 हज़ार फॉलोअर्स थे, सब्सक्राइबर्स थे, तब से हम फॉलो करते, राइट? वी सीन दैट सिल्वर प्ले बटन जब वो आया था, द अनबॉक्सिंग वीडियो, राइट? सो उस टाइम क्या डिफरेंस था? डू यू मिस द होम टाउन? Of course I do, bhai. Like I know for a fact that whatever I do, wherever I go, I cannot get those days back. And this is like, say whatever you want to say, this is such a huge lesson for the present, bhai. कि मतलब no matter what you do, no matter where you go, you will not get this moment again. कहीं भी तुम जाओ, कुछ भी कर लो, तुम्हें ये मोमेंट फिर से नहीं मिलेगा। तुम बस 3 साल बाद इसके बारे में बैठ के बात कर सकते हो कि यार क्या दिन थे वो, क्या लोग थे वो, क्या मोमेंट था ये, क्या मोमेंट था वो। We can only talk about it. We can never possibly bring those moments back. So of course भाई, I miss those days. घर में मम्मी का हाथ का खाना, जितने भी मोटे हो जाओ मम्मी देख के बोले कि नहीं बेटा पतला हो गया है, ये हो गया वो हो गया है, घी में रौंदे हुए पराठे, सुबह सुबह उठ के घर में बेड में बैठे बैठे भैया ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ना तुम्हें उठना है, ना तुम्हें खाने की टेंशन, ना खाने की चिक ना पानी की चिक ना आंटी की इधर उधर, कुछ नहीं भाई। That was a comfortable time. So like initial days when you started out with the vloggings, so how you started out? It was a very humble journey. We have seen the content have evolution. You get into video production and everything. It's a very interesting story. मैंने शुरू वीडियो बनाने से नहीं किया था, ठीक है? तो लाइक आई वाज ऑलवेज वेरी पैशनेट अबाउट ट्रैवलिंग, क्योंकि स्कूल में इंट्रोवर्ट सा था, किसी से बात वगैरह करनी आती नहीं थी। तो अब ये हुआ कि ठीक है भाई, स्कूल के लोग तो अब जज कर रहे हैं मेरे को कि भाई स्कूल के लोग तो पहचान चुके ना मेरे को कि भाई पारितोष आनंद कौन है, इसकी बात करने से फटती है तो ये बात नहीं करेगा, ठीक है? तो आई वाज लाइक कि ठीक है, आई वांट टू स्टार्ट ट्रैवलिंग, आई वांट टू सी एंड एक्सप्लोर मोर अराउंड माई सेल्फ टू सी इफ आई कैन कम आउट ऑफ दिस बबल ऑफ माइंड, बिकॉज आई हैड दिस ड्रीम, राइट? मेरे को सपना तो था भी, अपने गोल्स थे, एंड आई न्यू दैट I cannot accomplish those dreams, those goals by continuing to be an introvert. तो मेरे को था कि ठीक है, इंट्रोवर्ट से तो अपने को हटने का है, the best way to do is travel. और ट्रैवल का क्या है भैया, पैसे खुद के पास है नहीं। तो उस समय दिन का दिहाड़ी का काम करता था मैं। I used to be a trek guide. ठीक है, मेरे को दिन का 350 रुपये मिलता था ट्रैक का लीडर बनने के लिए। All I had to do was just study about that trek, study about the history of it, study about the ins and outs of it, and help people गेट थ्रू दैट एंटायर ट्रैक। अब चाहे वो बूढ़े हो चाहे वो बच्चे हो, सबको मोटिवेट करना, कहानियां सुना के पूरा ऊपर तक पहुंचाना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। उसके 350 रुपये मुझे मिलते थे। अब एक दिन इंटरेस्टिंग बात ऐसी हुई कि मैं वीडियो वगैरह तो इधर उधर लेते ही रहता था। एक दिन मैंने वो वीडियो कंपाइल करी और मैंने कहा कि डाल के देखते हैं क्या होता है। मैंने अपने यूट्यूब पे डाल दी, क्योंकि उस समय तक मैं घर में बैठ के वीडियोस बनाता था अपनी खुद, ऐसी बात करते करते कि भाई मैं स्टारबक्स में गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। फॉर दैट वंस आई अपलोडेड दैट ट्रैवल एक्सपीरियंस and the client who I was working for, he reached out to me saying कि भाई तू हमारे लिए गाइड क्यों बन रहा है, ये वीडियो कितनी बढ़िया है, ऐसी और वीडियोस बना, इस वीडियो का मैं तेरे को 20,000 रुपए दूंगा। वाह। कहाँ मैं ट्रैक का दिहाड़ी करके 2 दिन का 700 रुपए कमा रहा हूँ,
और कहाँ यहाँ एक वीडियो बनाने के मुझे he was like कि I'll buy it for 20,000. So that was a revelation. That was a very major revelation in my life that this is something that I can get my bread and butter out of as well. Amazing. So one thing that we all agree is that like है ना तुम बहुत grounded हो. हाँ. Like you already genuine. People used to change. या content यहाँ पे आई जा रही, let's start doing this. अब ये कर लेते वो कर लेते. But the case with you is not the same. So how you stay those like the eye vision is clear. Like बकचोदी करना तो बकचोदी करेंगे. That's the vision that you carry. अरे भाई, so how it happens? मुझे ये समझ नहीं आता कि लोगों को जिंदगी इतना कॉम्प्लिकेटेड करना क्यों है. एटीट्यूड रख के करेगा क्या बंदा? क्या उखाड़ लोगे तुम एटीट्यूड रख के? Like what? Of course, see, change is necessary, growth is necessary, but as long as that change is not taking away what got you there, it's worth it. So like for example, abhi what is bringing me here? The relationship that I've always tried to have with my people, Yeah, right? yeah. मैं बैठूंगा, मैं बात करूंगा, मैं बकचोदी करूंगा, whatever I do, I'll just try to make sure that we're on the same page. Not for a second do you feel कि अरे पारितोष तो यार बड़ा आदमी है. बिल्कुल नहीं यार, भाई है. घंटा बड़ा आदमी, कुछ बड़ा बूढ़ा बनना ही नहीं है मेरे को. I want to be the same 17-year-old that I was to my people that I still am today. So wait, that is what I try as well. I mean, like, I know for a fact that if I am wherever I am today, it is only because of the love and acceptance of the people. Because these people were the ones who actually accepted me for the decisions that I took in my life. There were a lot of people who did not accept me and they are right in front of me as well. मुझे पता है कि वो लोग कौन है, क्या क्या उन लोगों ने बोला, क्या नहीं बोला. How they hated me for whatever decision I took, whatever they called me. But on the contrary, there were people who accepted me. There were people who made me believe कि भाई तू कर लेगा, कोशिश तो कर, कोशिश करी, अब कर लिया या कर रहे हैं तो लोगों का साथ तो छोड़ना कुछ ऑप्शन है ही नहीं भाई. Great. So let's divide your story, right? So you started out with blogging. उसके बाद you started out putting shorts, reels, social media पे. Then वो reels से you started popping up, right? And now you're doing consistency reel. So what do you think? So like, what's the journey and what's the next? This 2023, how you're planning your content? Like, what's the evolution happen and how you have changed through those evolution? Because format भी change हुआ. Vlogs are very raw and they were lively. People love it. They're like you're showing your friends, your life, internal life, and everything. Then you come down to travel vlog series. You travel to Indonesia. So the transition took very fast. People took almost an year to do that transition. You're switching industries, I would say. And then now started giving self-help TED talk, a lot of speaking event. So what's behind that? How you train yourself for that? Bhai, I have no shame in admitting that I have no idea about what's going on right now, especially in terms of my content. Like, especially because it is very difficult for me to express it to people that my life has changed from what it was. Like, I no longer have my mother that I can create content with. I no longer have my people around me, Janu, Raghav for that sake, जिनके साथ एक कार राइड में जाके मेरा पूरा एक vlog बन जाता था. I no longer have those sources. And my life has changed altogether. Like, I cannot be the same person who's shouting on the camera that I used to be 3 or 4 years back. Why? Because the perception of Paritosh Anand is changing now. The way people perceive me is changing. Paritosh Anand is no longer looked at as that creator who would just come, he's full of energy, this and that. Yes, of course, I am that. But the perception changes. I am now also carrying the loads of being an entrepreneur, the loads of being a creative director, and a lot more identities along with that. So I have to live up to those roles as well, which is why it is getting a little confusing for me to show my audience what they want to see. तो उसका एक थोड़ा सा एक वो मतलब मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश कर ही रहे हैं पिछले साल से. जब मिलेगा तब मिलेगा भाई. But even in the meanwhile, like even in that process, it's not like I don't know what I have to do. I know for a fact कि भाई मैं कुछ भी डालूंगा, कैसे भी डालूंगा. I know what I have to do to make my audience love me for who I am and for what I'm doing. तो वो इधर उधर करता रहता हूँ मैं थोड़ा बहुत. You touched the point of entrepreneurship. You launched 2 brands, I would say. Like We Smile Media that you've been working on, Believe Clothing that you're working on. Like you have worked on your own merchandise. So what's the journey? How you got the idea for your media agency? What you're doing with that? Yeah, the idea was very simple. I feel that the one thing that really makes me stand out from a lot of other creators in the country is the way I tell stories. Yeah. You know, I am not the best editor out there. I am not the best cinematographer out there. I know this for a fact because there are a lot better editors, lot better cinematographers than me out there. But I have a knack for telling stories, a knack for bridging that gap between visuals and emotions. तो वो मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा अच्छे से कर लेता हूँ.
And that was a very huge gap that I saw in the market as well. कि भैया अभी currently market में there are people who are very brilliant video makers, very brilliant editors, but there are not a lot of people who are telling good stories. If I can try to bridge that gap, and if I can try to incentivize that gap by making us as the only players playing on this one particular game, I can make a living out of it as well. Perfect. So that was how the idea of Smile Media came out. Like the only concept here is to get smarter people than me in this one particular team, so that all of us can collectively work on this mission towards the future. Yeah. And what about the merchandising? Like when you got the idea, so because a lot of creators who are having millions of followers launching their merchandising, right? So you have almost 25-30K followers, but you had a great community. That's what I want to touch the point, that community, and then you launched the merchandise and you got sold out in just couple of days, and in just few hours, I would say, right? So how did happen? What was your story? Emotional क्या चल रहा था back of the mind? Launch करा तब सोचा था इतनी बिकेगी? अरे बिल्कुल भी नहीं भाई. Like my clothing brand is my passion project, honestly. Like I had no idea. Like मेरे जितने भी लोग थे, मेरे को क्या है भाई, मतलब I didn't do any research on it कि भाई कि कितनी बिकती है लोगों की, कितनी नहीं बिकती. मेरे को बस मेट्रिक पकड़ा दिया गया था कि भाई देख, ये इतनी बड़ी क्रिएटर है, ये इतने बड़े क्रिएटर है, इनके सिर्फ इतनी पीस बिके. अब इस हिसाब से बता तेरे को कितने बनवाने हैं. ठीक है, बट आई स्टिल हैड अ लिटिल फेथ ऑन माय ऑडियंस. आई वाज लाइक कि नहीं भाई यार, ये 3000 लोगों ने तो बोल ही रखा है कि खरीदेंगे. वो कह रहे कि तू 3000 की क्या बात कर रहा है, लोगों की 100-200 नहीं बिकती है. मैंने कहा नहीं यार, ये 3000 तो बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, इनको तो दे देता हूँ, बाकी और का देख लेंगे, जो होगा नहीं होगा. एंड दैट वाज द सीन, दैट वाज हाउ इट हैपेंड एज वेल. लाइक माय the person who's been helping me just distribute all of this, my clothing brand, he literally warned me. He told me कि भाई देख, अभी 600 700 500 से ऊपर नहीं करते हैं pieces. We don't know what could eventually happen, but then after the first day, after we launched the clothing brand, with the amount of traffic that went on the website, I was blown away because we didn't put a cap on the orders. अब क्योंकि आ रहा है तो मना कैसे नहीं आ रहा है तो मना की बात नहीं है. मुझे आता नहीं था कि वो शॉपिफाई में जाके कैप कैसे लगाते हैं. मैं तो रात में भाई, लाइक मेरा पिछले साल बर्थडे कब 12th मार्च से 16th मार्च के बीच के 4 दिन कब आए गए मुझे पता नहीं चला. आई डोंट नो लाइक वेयर आई लिटरली स्किप्ड 4 days on my calendar last year, which was why I kept my schedule pretty chilled out this year. इस साल भी although हम काम पे जा ही रहे हैं, पर still it's better. So that was Believe clothing for me. Like it was very unexpected, but the amount of love it's been. How many orders you get on the first day? भाई ये अगर रिवील कर दूंगा तो बहुत सारे क्रिएटर्स जलने लग जाएंगे यार. नहीं, but percentage like कितना सोचा था कितना हुआ? It's like 100%. 300% more than I thought. Perfect. हाँ, we were sold out in the next 72 hours itself. So amazing, great. Now, two things, right? Like, I've observed from your journey is that the risk taking and the work ethic. A lot of young people, like your audience, like 22-year-old, the teenage people, right? So your audience is more about that, more of that. So these people are like their work ethic, they're observing all of the creators, but when it comes to execution, thoda sa lack hota hai. What's your take on that? What's advice you're going to give to them? Yeah, honestly, like I don't know what holds people back, because half of the times we just blame our surroundings. We try to find excuses कि भाई हम अगर कोई particular XYZ काम नहीं कर पा रहे तो वो इसकी वजह से. बट वो होता नहीं है. आधे से ज़्यादा टाइम हमारे दिमाग के अंदर ही गोबर भरा होता है, जिसकी वजह से हम वो काम नहीं कर रहे होते हैं. It's either self-doubt or whatever be for that sake. It's just inside of us. I genuinely feel that a journey of 1,000 miles, it starts with a single step. So if you start today, that is where you'll figure out where to go from this step and onwards. अगर आप लोग सीढ़ी के नीचे से ही बैठ के सोचते रहेंगे कि भैया ऊपर कैसे चढ़ना है, तो आप लोग चढ़ नहीं पाएंगे. जब तक पहला कदम नहीं लेंगे, अपने को फिगर आउट नहीं कर पाएंगे कि भाई अब ये पहला कदम ले लिया, चलो ठीक है, अब दूसरा कदम ऐसे लेना है, तीसरा कदम ऐसे लेना है, चौथा कदम ऐसे लेना है. And as far as risk is concerned, भाई, I genuinely feel that we're very young. 23, 24, 25, 27, 28, 30s तक we have a lot of time to experiment as much as we possibly can. Why? Because this is meant to be that time when you experiment. This is meant to be that time when you make mistakes. Because लोग डरते हैं मिस्टेक करने से कि नहीं भाई मैं गलती करूंगा तो मैं पीछे हट जाऊंगा. नहीं भाई, गलती करेगा, पीछे तब हटेगा जब उससे सीखेगा नहीं. अगर गलती करेगा और सीखेगा तो 10 कदम और आगे जाएगा. यही है भाई, रिस्क तो लोग गिरोगे, उसी में तो मजा है भैया. क्या कहानी बताओगे अपने पोतों को कि नहीं मैं बढ़िया बस
मैं खुशी खुशी मैं पहुंच गया यहाँ जॉब तक जहाँ रहता मुझे था, पहुंचा था। हर महीने पैसा आता था, अरे I चलो just slept. भाई, That's also great, I जॉब think, भी right? कर रहे करो, पर जॉब में भी रिस्क लो ना। अभी तुम बोल रहे हो कि अभी तुम्हारी 20,000 सैलरी आ रही है, तुम्हें कहीं से दिख रहा है कि अगर तुम यहाँ पे क्विट करोगे, ये कोर्स ले लोगे और तुम्हें 40,000 सैलरी मिल जाएगी, पर श्योरिटी नहीं है, लोन है, क्या जा रहा है? 2 महीना नहीं कमाओगे, 3 महीना नहीं कमाओगे, 4 नहीं, वापस से 20,000 की जॉब तो ले ही सकते हो फिर से, पर एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा एक। ये एक्सपीरियंस तुम 32 के होगे तो नहीं ले पाओगे ना, जब बच्चे होंगे जो पै 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 करते रहेंगे, बोलेंगे पापा चॉकलेट। That's true. So one thing, like, so what I consider yesterday, all my friends were also talking about this thing. It's just the mindset game. Knowledge आ जाता है, product आ जाता है, capital आ जाता है, everything is fine, everything is available out there. The mindset is what you have to work out. What do you do for that? But I try to be I try to be as disciplined as I possibly can, especially right now in my phase. Like, I am in love with my routine. I'm in absolute love with my routine, and I cannot let anything else destroy it. For a fact, because I know the amount of happiness that it brings me. I know that when the alarm clock goes off in the morning, I have to wake up. The pillow will reach out to me. ठीक है, वो बोलेगा कि आजा ना, आजा, थोड़ी देर और आजा, थोड़ी देर और सोते हैं. But it's about the little wins that matter more during the day. ठीक है, तुम वो छोटी छोटी विन्स होती है ना, उस मोमेंट में पिल्लो तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें लगेगा कि नहीं सो जाते, पर अगर तुम थोड़ा सा उठ के बेड के ऊपर उठ के इधर कोने में खड़े हो जाओगे ना, तुम्हें ऐसा फील होगा कि भाई ले, जीत गया। Amazing. These little wins, ठीक है। उसके बाद शार लिया, तुम्हें पता है गीजर का ऑप्शन है, बाहर थोड़ी थोड़ी ठंड है, पर तुम ठंडे पानी से अगर नहा लिए, डर लग रहा है, हेजिटेशन हो रही है, पर नहाने के तुरंत बाद लो, ये भी जीत लिया। These little wins, bhai. Like this is why I'm a very huge advocate of working out every single day as I possibly can. Every single day to nahi, but like at least 5 to 6 days in a week. Yeah, staying consistent. Absolutely, bhai. Like the more you push yourself, the more you try to gain control of your own mind, the happier space you'll be in, the much better space you'll be in. Kasam se. Now, like with your media agency, you're working with a lot of creators, na? So, what do you think so about the creator economy for individual creators who is just starting out? So, like Instagram, social media, people are also talking a lot about Instagram, social media, and other platforms that they're not giving us the reach. Usually, people get viral videos. You posted your first video and it went viral. Something like that happens. A lot of creators, but this is not happening right now. So, what's your take on this? What's the best way to get into it, and what one should think before starting out? A lot of people think like मेरे को brand deals आएगी, I'll get a foreign trip sponsored from a brand. It feels fucking fancy. Of course, I would say. So what's your take on this? How they can start off? The starting point in creating a content, that's what the most challenging task. By the only thing I think that you should think before starting out is don't think. Like this is what is keeping half of the people from starting out their content creation journey. कि भाई वही back again to what I told कि भाई तुम सीढ़ी चढ़ने से पहले तुम सोच रहे हो कि मैं आगे जाके ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा, पहले चढ़ के देखो तो तुम्हें पता चलेगा if it is for you or if it is not. क्योंकि अभी ना एक थोड़ा वो स्टिग्मा भी बन चुका है around content creation. Everyone is doing it, so I'll also do it. Why? Because it's cool. It's cool to post videos about yourself on the social media. It's cool to talk about motivational stuff. It's cool to dance on the social media. It's not. इट्स नॉट। तुम्हें 1 महीने बाद रियलाइज होगा कि नहीं भाई, छे बेकार फालतू का काम, मैं घर में खुश हूँ, कुछ अपना काम करूंगा, देख लूंगा कुछ भी। सो इट्स ओके, लाइक इट्स गुड टू एक्सपेरिमेंट. दिस इज हाउ यू रियलाइज वेयर यू योर इंटरेस्ट लाई, बट डोंट थिंक टू मच बिफोर स्टार्टिंग इट. Start out. That's step number 1. Step number 2, for things to work on the social media, one thing that I bluntly tell myself and almost everyone out there as well is कि भाई you have to be consistent, especially right now with the market being too saturated. 3 साल पहले it was very easy to create content and get famous on the social media. Right now it's not. Why? Because literally everyone out there is creating content. सब लोग बना रहे हैं कुछ ना कुछ. गली गली में आजकल क्रिएटर है, मिलियन फॉलोअर वाले भाई, गली गली में मिलियन फॉलोअर वाले क्रिएटर, और वो बाहर जा रहे हैं, उनको कोई पूछा कुछ नहीं रहा है. यही 3 साल पहले कोई मिलियन फॉलोअर वाला बाहर घूमे तो उसके पीछे गाड़ियां लग जाएंगी पूरी. So step number 1 is don't think, try it out for the sake of trying it out. Step number 2 is if you really want to do it, then you become consistent. You round yourself in a routine. You know for a fact कि भाई मेरे को अगर इतना करना है तो मेरे को करना है. As simple as that. मेरे को हफ्ते में 7 वीडियो डालनी है, नहीं 5 वीडियो डालनी है, नहीं 1 वीडियो डालनी है, तो डालनी है, हर हालत में डालनी है. And honestly, भाई, this is something that it's not easy at all. I
I'm struggling it with something like this till date. ठीक है, माना like I have a lot on my plate, maybe that's why I'm suffering with it, but सबके अपने अपने कुछ ना कुछ बहाने निकलेंगे. Yeah. You have to fight those excuses. You just have You to just commit. have to accept it. Absolutely, bhai. Perfect. Towards going on the end of the podcast, I want to know one last thing. Like, so do you think so that network is what you have built, and that's why you have been creating yourself and the brand that you've been building? What do you think? यार भाई मैं देखो, मैं तो सिंपल सरल सी भाषा करता हूँ भाई, ठीक है. मुझे ये नेटवर्क ये चीजें कुछ समझ आती नहीं थी शुरू में, ठीक है. बहुत सिंपल साधारण सा इंसान था मैं. मेरे को बस ये होता था कि लोग खुश हो जाए मेरे साथ काम करके, बस, और कुछ नहीं. मुझे पैसा, शुरू में तो भाई पैसा, मुझे पैसों की बात भी नहीं करनी आती थी. मुझे ये होता था कि भाई बस सामने वाला बंदा खुश हो जाए मेरा काम देख के, वो 2 शब्द अच्छे बोल दे कि वाह यार पारितोष भाई बढ़िया काम कर दिया यार तूने, तो मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं करा था, बस. बिकॉज ग्रोइंग अप एज एन इंट्रोवर्ट, दिस इज एक्सट्रीम वैलिडेशन फॉर मी ना, कि कोई बंदा मेरे को आके ये बोल रहा है कि भाई यार तू तो बढ़िया काम करता है. उस समय मैं हो गया अरे सही. सो वी फॉरगेट, लाइक वी चेज building network so much that we forget the one very essential step towards it, which is providing value. If you provide value one way or another, things will come back to you. Life is one complete circle. One last point, like you from introvert to extrovert, what is the journey look like? A lot of people, and this is the harsh truth, कि introverts के लिए थोड़ा सा tough होता है. Of course it is. It's very tough. People talk like I love to be alone. It's good at one point of time in career. I never loved to be alone. Okay. मैं जब इंट्रोवर्ट भी था भाई, ये this is a myth. This is a myth that people say. I have been on both the sides, and I can say for a fact that this side is a lot better. This side is a lot better. Why? Because I can fully express myself without worrying about what the other person is thinking, and I will not go. अब जैसे इस कॉन्वर्सेशन के बाद भी ना, मैंने अपनी दिल खोल के रख दिया ना यहाँ पे. अब मैं 5 मिनट बाद एटलीस्ट ये नहीं सोचूंगा कि यार मैं ये भी बोल सकता था. Introverts, this is what I this is literally the maximum struggle I had back then. कि मैं किसी से भी बात कर रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, नॉर्मल डिस्कशन हो रहा है, whatever for that sake, I would go out that room and I'll think like, अरे भाई यार ये क्यों नहीं बोला. एक आर्ग्यूमेंट हुआ, उसके बाद रियलाइज हो रहा है कि यार ये अच्छा पॉइंट था, ये बोलना चाहिए था. So honestly, as far as this journey is concerned, I am very happy to be where I am right now. More for the fact because I know that I worked a lot to be where I am. कि मैं अभी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो दैट आई ट्रैवल्ड अ लॉट. आई नो दैट आई जेन्युइनली पुश्ड माई सेल्फ आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन डेलिबरेटली, फोर्सफुली टू गो टॉक टू पीपल, बिकॉज इट जस्ट वही वाली बात होती है, छोटे छोटे विंस. ठीक है, बात कर ली, हेलो बोल दिया जाके, हेलो, वहां मिनेश बैठा है अपने दोस्तों के साथ बॉन फायर में, मुझे डर लग रहा है कि मैं जाऊं ना जाऊं, मैं जाके बस इतना बोलता हूँ और मिनेश भाई कहाँ से हो, बस. छोटी छोटी विंस, वहां से कॉन्वर्सेशन खुद बनता है यार, आगे वहां से ट्रांजिशन होने लगता है, खुद हो जाता है. इट्स जस्ट दैट वन स्टेप दैट मैटर्स. Thank you so much, bhai. Thank you so much for being on the podcast. It's so far away. Okay, so towards going the end of the podcast, you have to do one last thing. वो beginning वाला चिल्ला के जब intro कर देता. अरे भैया, out of practice हो गए हो. No. You can do it. You can do it too. So what is up, guys? My name is Paritosh Anand. अरे भूल गया भाई मैं. So what is up, guys? My name is Paritosh Anand. That Desi Vlogs. नहीं. Whatever day. अच्छा हाँ, sorry. Bro, whatever. Take number 3 now. What is up, guys? My name is Paritosh. I hope you're having a cracker of a Sunday, Monday, Tuesday, whatever day you're living. भाई क्या होता है? अच्छा नहीं. हाँ. So what is up, guys? I hope you're having a cracker of a Sunday, Monday, Tuesday, whatever day you're living. My name is Paritosh Anand. That Desi Vlogs. और भैया आओ आज का पॉडकास्ट का कार्यक्रम खत्म करते हैं.